Along the banks of the sacred Saryu River lies this timeless town of Ayodhya, a confluence of faith, history, spirituality, all intertwined seamlessly. This is another day, unfolding another chapter into the spiritual sojourn called Ayodhya. Welcome once again to Ayodhya Dham. We continue our journey, which is taking us through the alleys, temples, ancient structures and remains, ghats, and nothing less than a heritage walk. Here we begin yet another profound exploration of monumental and spiritual soul of Ayodhya or Ayodhya Dham. Welcome to legendary Ayodhya city, which we bring to you from the iconic Ram Ki Pedi or the series of ghats on the bank of much revered river Saryu. They say here the weight transcending many generations in civilization of having Ram Mandir here in the heart of Ayodhya, or they call Ram Janmabhoomi, has finally got over. That is something which is culminating into the Pran Pratishta ceremony or the consecration ceremony or installation of idol of Lord Rama in the temple, in Ram Mandir temple here in Ayodhya. Explored and unexplored treasure troves were waiting for us as we sought deeper insights into Ayodhya and why it was called Land of Lord Ram. This is Rampath, not an ordinary route which takes you through the very heart of Ayodhya, but is also offers glimpses of iconic temples and shrines. Also striking about Rampath is its spirituality, permeating in every nook and corner, and symbolism and engravings that speak to you. The bow, the arrow, or the sacred Om, or Jai Shri Ram, or these flags. As we capture all this through our lens, young disciples of Vedas from Ram Gulela Ashram or Monastery, Yogendra and Vishwanath become our eyes and ears, adding layers of meaning to my story as I feel blessed to narrate this to you. Such symbols adorning many establishments along the path of Rampath. Colors of Ayodhya here in the middle of the very popular, hustling, bustling Hanuman Gadi market. Anything that has a mention in epic Ramayana is something which finds place in this market. Whether you talk about these beautiful flags where you can see Lord Ram and Lord Hanuman, and anything depicting the Ram Janmabhoomi and Ram Temple is what you find in these markets. We continue to talk with these two young students. Yogendra, थोड़ा market के बारे में बताओ. इतनी सारी भीड़ यहाँ रोज लगी रहती है? लगी रहती है, जैसे कि हनुमानगढ़ी का मामला राम जन्मभूमि की तरफ जाता है रास्ता, कनक भवन, दशरथ महल. हाँ. तो इधर से सब होकर जाते हैं मैम. तो इधर बराबर रास्ता चलता रहता है, इधर भीड़ भी लगी रहती है. हाँ. ऐसी और मार्केट में जिसको जो पसंद आता है वो लेते हैं. This is very famous Hanuman Gadi market, a long stretch of road adorned with history, spirituality and cultural richness, and of course the local flavor of Ayodhya. Each engraving here tells us a story. This market is an unmissable spot for any devotee or tourist visiting Ayodhya. Ahead of the consecration ceremony, the emotion and energy in Hanuman Gadi market is also palpable in the air. The devotees and the natives of Ayodhya erupt sporadically into these chants. Moment you enter Ayodhya, this is what greets you at the very entrance of Ayodhya. ये खरीदना चाहते हैं झंडा, क्यों? घर के लिए, राम राज आने वाला है.
500 साल का संघर्ष है, 500 साल बाद राम राज्य आ रहा है, तो लोग तो लेवे करेंगे, सभी में उत्साह है, सभी लोग, सब पर्यटक आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। अभी कि हाँ 22 तारीख के बाद तो और भीड़ होगी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी लोग। They are telling us that this has been a very, very long wait of almost 500 years, the battle of 500 years, which has finally culminated into the Ram Janmabhoomi Mandir, Ram Mandir, and ahead of 22nd January event, there is certainly the sense of festivity which rents the air. Another palpable sentiment writ large on their faces, besides smearing Jai Shri Ram on their foreheads, is that Ram Raj ki Vapsi, which means that now this is going to mark the onset of the era of Lord Ram. जय श्री राम। पिछले 500 वर्षों से मंदिर के लिए, अपने स्थान के लिए तरस रहे थे, उसके अभी राम राज्य पूर्णतः 22 जनवरी को वापस आ रहा है। हम लोगों में एकदम हर्ष उल्लास है। जय श्री राम। पूरी अयोध्या मानो दुल्हन की तरह सज गई है, और मैं एक बार बस दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बरसों से हमारा इंतजार था, रामलला हमारे अपने घर में विराजे, वो घर आज वापसी मिला है उनको, इसलिए आज हम लोग हर्षोल्लास से दर्शन करने आए हैं। बहुत दूर दूर से आए। जय श्री राम। You know, there are some pictures, some visuals which speak louder than words, and I think these are the visuals that have spoken not only for themselves, but the end of the long wait, the love, the devotion, the faith that they have in their Lord Ram. For any visitor or devotee, the depth of faith in their hearts for their Lord Ram is what binds them together. This is testament to the enduring spirit of India's this spiritual heartland, Ayodhya. And ahead of the big day, it is replete with saffron surge, and this ancient town continues to exude ageless spiritual aura. पहले तो बहुत सकरा रोड हुआ करता था, उतने बेहतर ढंग से नहीं चल पाते थे। भीड़, मेला वगैरह में इतनी भीड़ हो जाती, रश हो जाता था, रास्ता बंद करना पड़ता था। अब ये हाल नहीं है कि आने वाले समय में लोग बेहतर रहेंगे। बहुत रंग है यहाँ पे देश के देखने को मिल रहे हैं। ये पुराना मार्केट है, मेन मार्केट यही है जन्मभूमि और कन्या भवन के मार्ग के बीच में। Administration has spruced up the roads here, the marketplace, the shops here. They have refurbished the shops here, and he's also telling us that this has also, in fact, provided a lot of employment to the people of Ayodhya itself. We have Ram Darbar here. This is something which you get to see in every shop here. Ram Janmabhoomi का भी यहाँ पे पूरा मॉडल राम जन्मभूमि का पूरे लाइटिंग सिस्टम है, ये आपको सादे में है, पूरा चलता है, बिकता ज़्यादा है। He's telling us these models of Ram Janmabhoomi and their miniatures is something which anybody who comes here, this is a must buy for them. बाबा ये मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर जो है, इस मंदिर का नाम है राजद्वार, अयोध्या के राजा साहब ने बनवाया है। और कितने साल पहले? ये इसके शिलालेख पर आगे मेन द्वार पर लिखा हुआ है 500 वर्ष पहले का बना हुआ है। ये जो ऊपर कलश है ये सोने का है यहाँ। और ये मंदिर आप कह रहे 500 वर्ष। The historical and cultural significance of Ayodhya, coupled with forthcoming consecration ceremony, has created an atmosphere of joy and festivity and reverence. This was another walk of faith for me in Ayodhya, where pilgrims arrive in droves to take their sacred journey. The natives definitely take a lot of pride in their roots, and they welcome you with the open arms, as I feel free to experience and enjoy the local cuisine and the local regional flavor. कैसा लग रहा है? खुश हो बहुत? बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है अयोध्या का नज़ारा मेरे को। अयोध्या में आपका स्वागत है। जय श्री राम। I'm getting very overwhelmed with their love
with their affection, with their emotion, and most importantly, the happiness that resides within the residents of Ayodhya. Because this is the moment that they have been waiting for, the homecoming of Lord Ram. Traversing famous Hanumangadi market, we found ourselves under a grand banyan tree inside the premises of iconic Dashrath Mahal temple, just across the road. Meet 21-year-old Sant Prabhudas, a monk who dedicated his life to the studies of Vedas and scriptures since his childhood. Raghuvamshanatham karunyarupam karunakarantam Padambujam Raghupatim Sharanam Prapadye Sri Ramachandram. We sat with Prabhudas and many other monks like him outside Dashrath Bhavan in Ramkot, soaking in old world charm and purity as more and more monks joined the conversation. So we are here at Bada Sthan or Badi Jagah, which means big place, in the very premises of Dashrath Mahal. The legend goes the legacy of this place dates back to millions and millions and trillions of years ago. Dashrath, the father of Lord Ram. And in the heart of Ramkot in Ayodhya, Dashrath Mahal is one of the most popular tourist place. सरकार की श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी की श्री दशरथ जी के राजमहल की The legend goes this charming palace, which is thought to have served as both King Dashrath's capital and the home of Lord Ram as a youngster, has an immense spiritual significance for the devout of Lord Ram. Priest of Dashrath Mahal, Sant Prabhudas is going to run us through the legacy, the popularity and the historical significance of this very place. इस स्थान को बड़ी जगह या बड़ा स्थान क्यों कहा जाता है? जी जी, अब बड़ी जगह बड़ा स्थान तो कहना स्वाभाविक है, क्योंकि राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती, एक राजा होते हैं, एक महाराजा होते हैं, एक राजाधिराज होते हैं, एक महाराजाधिराज चक्रवर्ती होते हैं। तो राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती थे सिर्फ दशरथ जी महाराज, तो वो तो बड़ी जगह बड़ा स्थान नाम स्वाभाविक है। तो बड़ा स्थान बड़ी जगह तो हो गई, क्योंकि राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती जी का दशरथ जी का राजमहल है। जो महल जहाँ पर उनके चारों बेटे बालपने से वो पूरा सर्वांग जो है अपना जो दैनिक क्रियाएं सब कुछ, सरयू स्नान करना, पूरी राजपाट देखना, सब कुछ। देखिए भगवान की कृपा है, राम जी थे, राम जी हैं, राम जी रहेंगे। राम जी का राज्य था, राम जी का राज्य है, राम जी का राज्य रहेगा। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका। इसलिए राम जी की ऐसी ध्वजा, ऐसी कीर्ति, इसलिए उनकी महिमा ही अनंत है। हाँ। Sant Prabhudas is telling us that Ram the, Ram hai, Ram rahenge. Ram Rajya tha, Ram Rajya hai और Ram Rajya rahega. Which means Ram was there, Ram is here, Ram will continue to stay here. ये बट का वृक्ष विश्वास के लिए श्रद्धा विश्वास रूपिण श्लोकों में कहा गया है और विश्वास के रूप में उदाहरण दिया गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, यानी विश्वास हो तो बट के समान हो। अगर बट का वृक्ष लग गया कहीं तो समझ लीजिए वो जड़ पकड़ लेता है। इसी प्रकार राम कृपा है। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका। विश्वास राम जी पे अटूट रखिए, भरोसा रखिए। राम जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप खुद देखिए कि उनका जन्मभूमि पे जो है विशाल भवन, जो है दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। And now it was time for us to go inside the Dashrath Mahal or the palace of King Dashrath, who was father of Lord Ram. Believed to have housed Lord Ram's childhood and King Dashrath's capital, this pretty palace hosts a decorated and ornamented entrance with beautiful paintings. You cannot help but notice. The intricate carvings depict scenes and tales from Ramayana, adding a unique aspect to the monument's aesthetic appeal. ये बताइए, राम जी वापस आ रहे हैं अयोध्या में? मंदिर जोगी जी बना दिया, अगर मंदिर नहीं बनता। और राम जी की वापसी हो रही है अयोध्या में। राम जी तो अयोध्या में थे ही। हाँ। राम राज वापस आएगा? कब आएगा? क्या आएगा?
यहाँ के दर्शन करने भगवान की, राम राज के दर्शन करने सब राज आएगा। ये पृथ्वी का ना राजा राम जी है, अयोध्या जी से कोई राजमहल नहीं है, राम राजा रहा पृथ्वी के, उसका रखवाला हनुमान जी है, राम से बड़े राजा कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज की जय। Pujari Baba or Awadh Bihari Das opens up and tells us how Dashrath Mahal holds immense cultural and regional importance for both devotees and historians. The palace, which houses temple, not only draws countless visitors but is very integral to the heritage and legacy of Ayodhya. This is Dashrath Mahal or Dashrath Palace, which is thought to have served the home of Lord Ram in his younger days and also served as a capital of King Dashrath. The legend goes that this ornately designed entrance with lovely murals and saffron-clad monks since generations and generations have been heard singing verses from epic Ramayana, also verses in the praise of Lord Rama and Lord Hanuman. They continue to recite mantras inside the temple, which originally was a palace. There is a massive footfall which this palace or this Dashrath Mahal temple in a way also witnesses day in and day out. And especially in the wake of the Ram Mandir, which is a few kilometers away from this particular site, there has been a massive uptick in the footfall of devotees. Let's continue to talk to Prabhudas ji. Prabhudas ji, इतनी मान्यता है इस जगह की, ये मतलब यहाँ आके आप महसूस करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और ही इरा में पहुँच गए? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम है। श्री अयोध्या जी धाम वैकुंठ से साक्षात वैकुंठ है, भगवान का निज धाम है। आप श्री दशरथ जी के राजमहल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे चारों बालक श्री राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती जी के इन्हीं आंगनों में खेलते होंगे, बात करते होंगे छम छम। तो ये पहले महल था, दशरथ जी का महल था, और उसके बाद कई जनरेशन, सदियां और युग आए गए चले गए और अब मंदिर बन गए। जीर्णोद्धार होता गया, अपने तरीके से वो बनवाते गए, उसको करते गए। राम क्या है? राम एक विचार है, राम एक सोच है, राम एक कर्तव्य है। तो राम जी एक विचार है, उनका बचपन, जैसा कि लेजेंड्स बता रहे हैं, जो कि लिखा है कि उनका बचपन यहीं से शुरू हुआ, यहीं पले बड़े। देखिए ना, महल में एक एक पंक्ति आपको यहाँ के जो पंक्तियां लिखी मिलेंगी जो समाज को। महावीर बजरंग बली की जय। Amongst many traditions transcending numerous eras, there are many living legends associated with Dashrath Mahal. Meet Hari Ramdas, 85 years of age, who prepares Bhagwan Bhog or meal for Lord. In this case, here for King Dashrath and his entire family in this rasoi ghar or kitchen. The tradition and the kitchen which has been there since time immemorial. Meals are prepared with utmost reverence, care and royalty for their Lord Ram at least 3 times in a day. They prepare Bal Bhog, that's breakfast, Raj Bhog, that is lunch, and Biharu, that is dinner. मैं 15 साल से 16 साल से यहाँ दशरथ महल तीर्थ स्थान, परम भूमि, पवित्र भूमि के स्थान पर राम जी की सेवा में कार्यरत हूँ। इस आश्रम में 3 तरह की भोजन बनती है। प्रथम चाय के रूप में संत महात्माओं के लिए, दूसरी प्रक्रिया बाल भोग के लिए है। जो बाल भोग बनती है उसमें अनेकों प्रकार की बाल भोगें हैं। तीसरी भगवान का भोजन बनती है जो सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, वह भोजन भी विभिन्न प्रक्रिया की होती है। जहाँ तक दशरथ महल का सवाल है तो यहाँ पर गौ सेवा है, संत सेवा है और यहाँ सबसे बड़ी भंडारा की सेवा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस भौतिक युग में भी दशरथ महल में आज भी लकड़ी पे भोजन बनता है। जो त्रेता काल से लकड़ी पे भोजन बनता था वो आज भी यहाँ लकड़ी पे भोजन बनता है। भंडारे में जो भोजन की व्यवस्था है बिल्कुल ही सात्विक है, उसमें संत ही जाकर के भोजन बना सकते हैं। कच्चे भोजन में किसी तरह का बाहरी रसोइया आकर के कार्य नहीं कर सकता है।
जितना भी बड़ा भंडारा हो वो साधु लोग ही बनाते हैं और भगवान का उसको भोग लगाया जाता है और खिलाया जाता है। Just across the road, we make it to the Dashrath Bhavan, yet another ancient building which carries its own rich legacy. Dashrath Bhavan is an embodiment of devotion and a symbol of the enduring connection between the mythology and modern era. Here the atmosphere reverberated with devotion, chants of prayers, hymns by disciples and monks. The collective spiritual energy inside the Dashrath Bhavan created a sacred aura that enveloped us, uplifting our hearts and minds. What you see on your screens is a superstructure which is at least 112 years old. This place is called Kothi of Raja Dashrath, which means mansion, which belonged to King Dashrath, the father of Lord Rama. And as far as this place is concerned, it has since generations and generations housed chief priests of the Dashrath Mahal. महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी हमारे साथ है, जो महंत है दशरथ महल के। दशरथ महल की श्रद्धा, मान्यता, इस जगह की प्रतिष्ठा और अयोध्या में कितनी मानी हुई जगह मानी जाती है, इसके बारे में हमें बताएं। चारों भाई जिस भूमि पर खेले बड़े हुए, जिस भूमि पर रहकर विद्या अध्ययन किए, उस भूमि का क्या महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है? शेष शारदा भी नहीं कर सकते तो मनुष्य भला कहाँ से कर सकता है? अयोध्यापुरी की बड़ी भारी महिमा कहा गया है। अयोध्यापुरी मस्तके, जिस प्रकार से शरीर में मस्तक का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से सब पुरियों में अयोध्या जी का महत्व सबसे श्रेष्ठ है। अयोध्या हमेशा से पूरे विश्व को शिक्षा देता रहा है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने सबका कल्याण किया, उसी प्रकार से अयोध्या तो यही कहता है किसी को दुख न हो, किसी को जीवन में परेशानी न हो, या यह तभी संभव है जो वह राम जी की शरणागत हो जाए। राम जी के बस में सब कुछ है, काल भी बस में है राम जी के। तो जो राम जी के शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन से सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। By now, Ayodhya offered us a profound and a diverse range of experience on a spiritual and cultural journey. From sacred kitchens to exquisite artifacts, from serenity of Saryu Ghat to architectural grandeur of countless ancient temples. Welcome to Ayodhya Dham, steeped in spirituality and history, with legacy of time immemorial. Its breathtaking view, legendary Ayodhya Dham, depicted as a symbol of dharma or righteousness. The belief that Ayodhya is the divine abode of Lord Ram has been passed down through generations and generations, fostering a deep emotional and spiritual connection for Hindus of India.